The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Hello and welcome on Connectivity platform once again. We have a special webinar on Sunday morning on 31st March, last day of financial year. We have a wonderful speaker with us, CA Shweta Jain ma'am. Ma'am, thank you so much for accepting our invitation despite of your busy schedule. Ma'am is a wonderful speaker, orator, taking session on multiple topics. One of the topic is our today's topic, statutory bank branch audit, long form audit report, and any topic on bank branch audit I can say, and on multiple topics like code of ethics and few other topics as well. And every time ma'am is called for these wonderful sessions by so many branches and the organizer, study circle organizer in entire country I can say, and not only in western region. Ma'am is also hold the position in the past as an past chairman of Vasai branch, one of the vibrant branch I can say, where we have seen at least in this year more than 4 CCM, or at least 4 CCM and yes, sorry, RCM, my mistake, RCM from the one single branch of the WRC. And we have seen the this year we have a chairman and secretary also from Vasai branch. So all credit to you ma'am, because you and all other past chairman has made the branch as in vibrant branch. The I think as a female chairperson you made that the start point of the in the branch as well, to more and more female should come ahead in the branch activities and the branch management committee as well. So and ma'am has a, in the first year of this council, ma'am is a secretary as well, and we have seen a great work immediately after COVID. Is a wonderful year and eventful year we can say in the your tenure as a secretary, ma'am. So once again, thank you, ma'am, for the accepting our invitation. Let me tell you, ma'am, we have around 100 joinees today on the GoTo webinar, but even more people are joining on YouTube and LinkedIn Live as well. So would like to request everyone to post their queries in the question tab, as in when you have any query. So ma'am will take a one by one, as in clause by clause will the clause by clause will discuss the long form audit report. So ma'am will take after one clause the query, or after a few of the clause the important clauses. And let me also thank CA Abhay Chhajed sir, who is the Central Council member, who is our keynote speaker for our today's session. Sir will join at any time. Sir is traveling today for the session on the bank branch audit itself, and sir is in traveling as of now. So whenever sir is comfortable and reach the destination, will join us as well. And at that time, we'll have a keynote address from sir as well, the important aspect of the statutory bank branch audit. So now I would like to request ma'am to share the screen and take the proceeding ahead for our today's session, ma'am. Over to you, ma'am. Thank you. Thank you so much, Virag, first of all, for the kind words for me. And the credit, I think, goes to our members. Without their support, we could not have reached where we are today. So thank you so much. And also would like to congratulate to you for doing a great work. You are spreading a knowledge, which is, I think, most important asset, I can say, for anyone's life, and especially chartered accountants. Of course, for us, knowledge is really at most important. And you are doing selfless services since so many years. So really, my best wishes to you. Keep up the good work. And whenever you required my help, I always be there. So it goes without saying, you just ping me, you just say me what is required from my side. Definitely, I'll be there. So thank you once again. Coming to our today's topic, long form audit reports. I mean, Ma'am, your screen is visible. Just make it a full screen or a slideshow mode. Just a minute.
the camera screen, can we shrink it? I mean, I can see the screen of our photos only. So you click on that LFAR slide, ma'am. So you will be visible that slide and make it a slideshow. Yeah, perfect. This is Perfect, ma'am. perfect, Perfect. right? Please continue. Okay. Yes. Yeah. So Abhay sir, whenever he comes, no, so just let me know. So we'll Sure, stop, and that's perfectly fine. No issues. Okay. So if I talk about LFAR, I mean, we have listened in so many episodes, even with Virag, about bank audit, and I think 1 or 2 sessions are also pending. So हमने वेरिफिकेशन ऑफ एडवांसेस भी सुन लिया, क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो भी देख ली. अब now the time has come, whatever we have observed, now we have to report it in a proper manner. So here LFAR comes into the picture, and most of the time हम सोचते हैं कि ठीक है पहले सारा वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लेते हैं and then we'll start filling up this report. But my suggestions will be there. You please go through the report first, prepare your audit program according to that, because if you read this report and if you go by this report for the verification purpose, your more than 60-70% audit automatically will be done, because there are number of clauses in this report, and उस सारे clauses में आपको report करना है. So the LFAR is not just a simple questionnaire like we saying yes, no, or not applicable. We need to write some description in front of the clauses or in comments or remarks. So to write that comments, definitely the depth checking, depth verification is required. What are the areas where we need to focus that we heard in last session? So I'll not touch more on that. So for going a bank audit, first understand that there are some underlying assumption, which means if you are going for the bank audit, it is assumed that you know some things which is an underlying assumption related to the banking industry, which means you should have a knowledge of government policies, banking industry, some history of the bank and branch allotted to you. Like अगर आपकी branch merge हुई है, उसके पहले कौन सी बैंक थी या कौन सी branch थी. So what are the history of the branch and उसका the whole policy क्या है, that you need to understand first. Banking terminology like the system में, financial system में what are the commands, क्या क्या schemes होती है. So these are the things we should which is considered, like if you are going for the audit, you are well versed about it. Some rules regulation which is applicable to the bank, like IREC norms, product handled by the bank and complexity involved. Every branch you will in every branch you will see the different products like housing loan, term loan, CCOD, bank guarantee, packing credit. So particular in your branch, what kind of product is handling by the branch, that you need to understand first. What type of banks are there? These are the underlying assumption which is supposed to be like you should aware about it. So I'm not going through much in this. We directly will jump into the LFAR. Just only the thing is, these are the standard जो आप बैंक ऑडिट पे जाने के पहले थोड़ा सा एक बार go through कर लीजिए. ऐसे 200, 210, 220, 230 audit documentation, which is really important, very important. 300, 310, 15, 320, 400, बिकॉज ये सारे स्टैंडर्ड आप जब गो थ्रू करोगे आपको काफी सारी इंफॉर्मेशन यहीं से मिल जाएगी कि आपको ऑडिट कैसे कंडक्ट करना है और आपको फिर LFAR में कैसे उसको डेटा को फिल करना है. ऑडिट एविडेंस, एनालिटिकल प्रोसीजर, सैम्पलिंग, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर which is most important, using the work of another auditor, forming an opinion is SA 700, 701 is a key audit matter, 705 MOC and 706 emphasis of matter.
See, all 700 to 706 is related to independent audit report. So आपको आपकी report में अगर कुछ mention करना है, if you feel so there are some matters which is a key audit matter, और MOC तो of course हमको मिल ही जाता है कि वहाँ पर dialog box open होगा and you have to, if you are passing an MOC, आपको वहाँ पे detail भरनी है. But what about if I don't want to pass an MOC, but I want to highlight some matter as a key audit matter or emphasis of matter? So उसके लिए आपको वहां पर एक others का dialog box open करवाना पड़ेगा and you can write in that. Because आप जैसे ही बोलोगे कि I want to edit this report, immediately bank manager or bank people will start saying that this is the automated report, fixed report hai, you cannot change in this report. But this is not like that. This is my report as an auditor, so I can write whatever I want to write it in this report. So your report should be in a proper format with the followed by all the standards. So please see carefully. Now coming to the long form audit report. LFAR includes definitely questionnaires. So this questionnaires for specialized branches also, like branches who are dealing in foreign exchange transactions. For them, of course, this questionnaires is applicable. Some branches who are dealing in very large advances, this is for them also. Some branches dealing in the recovery of NPA, of course, it is for them also. And for branches dealing in clearing houses operations, service branches, जिनको हम बोलते हैं. So LFAR includes questionnaire for specialized branches also. There are 3 annexures in that. It was revised in 2020. So the revised format is annexure 1 is for statutory central auditor. So if you are going for the branch audit, annexure 1 is not applicable to you. Annexure 2. Annexure 2 is for branch auditor and appendix as a part of annexure 2 for specialized branches also. So if you are going for the branch audit, annexure 2 is important for you. And then 3 for specialized branches for 2. Annexure 3 is on large, irregular or critical accounts for branch auditor. So generally in branch audit, you have to fill annexure 3, where your advances is more than the limit, which we discuss after this slide. So if you are coming under this, then you have to fill annexure 3. See, what LFAR is a questionnaire which is prepared by RBI in consultation with stakeholders like ICAI, so which auditor need to answer, but the answer should not be just like yes, no, or not applicable. Like you should write some descriptive also in comment. And the objective of this LFAR is not just we want to verify advances, but also we need to comment on operational area of the branch, internal control of the branch, whether like branch is satisfactory or not, how they are dealing with the customers, their behavior with the customers. So these all things are there which you need to comment on that, whether security officers is there or not in the branch, if gun permission है उनको तो gun भी है कि नहीं उनके साथ, CCTV camera proper काम कर रहे हैं या नहीं. So these all are the area where you need to comment in LFAR also. So LFAR is not just a advance focused, otherwise we need to focus on operational area also. See, LFAR is prepared by the bank. So first branch manager has to accept it, whatever you are preparing or whatever you are giving in comments. So you advise is that you please discuss your content with the branch manager and get his response before finalizing the same. Or any matter, if you feel so ki this is an adverse remark in main report. Main report means our independent audit report is like MOC or emphasis of matter or key audit matter. So those comments should be elaborated in the LFAR also in the respective clauses.
सो ऐसा नहीं है कि हमने ऑडिट रिपोर्ट में डाल दिया तो हमको LFAR में डालने की जरूरत नहीं है. Though you have passed the MOC or you have escalated the matter in independent audit report, but again you need to incorporate compiled in LFAR report also. And also the auditor may disclaim any significant problem if they have faced in the preparation of LFAR. So for preparing a LFAR, what kind of data is important data? You should gather information before starting filling up the LFAR report. So first is a cash and balances with RBI and other. First clause हम देखते हैं ना, asset का clause है उसमें, cash पे we need to comment on that. Cash में we'll discuss one by one. So just I'm putting this remarks here. Then advances and money at call and short notice. Investment, whether the bank has done any investment in other banks or deposits. Bills payable and sundry deposits. Please get the ledgers of that. Books and records, stationery and stamps. There will be a register in the bank. So please take that register also before starting a LFAR. Some copy of or print, you can take a print of suspense accounts, sundry accounts and contingent liabilities. P&L balance sheet, of course, it is required. Reconciliation of control and subsidiary accounts and any other matter if you feel so. So whatever you have observed during the process, you can prepare a report on that, and that report is also will be a data for the LFAR. Now, starting the first, there are total 4 segment I can say in this LFAR. First is assert, then liability, then profit and loss account, and then miscellaneous sort of. So in each and every segment, there are a number of clauses. So in first clause, assert clause, first is a cash. What is the question in LFAR is cash balances at the branch or ATM being checked at periodic interval as per the procedure of the bank. Answer you have to give it in yes or no, but उसके पहले आपको check क्या करना है? First, you have to confirm from the branch that उनकी branch में adjoining ATM है क्या है, और वो बैंक में ही कैश उसका आता है या नहीं आता है. सो 31 मार्च का जो क्लोजिंग कैश होगा, द सेम टाइम पे ATM का कैश भी आपको लेना चाहिए. एंड देन दोनों ऐड होने के बाद उनके सिस्टम में अगर वो कैश का टोटल आता है, सो यू नीड टू वेरीफाई ATM कैश ऑल्सो एंड ब्रांच कैश ऑल्सो. वो आपने चेक किया. उसके बाद में ये प्रोसेस बैंक कब कब फॉलो करता है? Are they following in a 15 days, monthly, yearly? How they are doing it? Because cash verification is important. If your आपकी branch में अगर concurrent auditor है, तो every month में 2-3 बार वो भी check करेंगे. So आप वो report भी एक अपने लिए base ले सकते हो. Then you will be able to comment on this clause that yes, branch is taking care of and they are taking or they are checking the cash on a periodic intervals. आपका तब आंसर यहाँ पे आएगा, और द आंसर शुड बी इन कंप्लीट डिस्क्रिप्टिव मैनर, नॉट जस्ट ओनली यस और नो. सेकंड, does the figure of the balances in the branch books in respect of cash with its ATM tally with the amount of branches with the respective ATM based on the year-end scroll generated by ATM? If there is any difference, same should be reported. See, ये कैश आपका 90% केसेस में it never gets tally, because मेरी ब्रांच का कैश 4 बजे बंद हुआ है, ATM में हो सकता है वो completely rotate हो रहा है कैश. So maybe 1 or 2 minutes के और seconds के difference पे भी कैश निकल रहा है या deposits हो रहा है. So आपको वो system generated ATM का एक balance report आएगा, वो लेना है, कैश tally report लेना है और उसको reconcile करना है GL balance के साथ. GL बैलेंस में कैश का पोजीशन है, उसमें आपका ब्रांच का कैश प्लस ATM का कैश दोनों आता है. सो दोनों को आपको टैली करना पड़ेगा. सेकंड,
in assert clause, balance with RBI, SBI and other banks. Generally, this clause will applicable to the branches where treasury operation is there. If your branch is not having this, so this is not applicable to you. In this, other credit and debit entries originated in the system provided by RBI or other banks remaining unresponded for more than 15 days. In such type of accounts, if you find any credit or debit entries जो 15 दिन के ऊपर की है, so then those entry you should take it in your sample for the verification purpose, because here review reconciliation process should be followed throughout the year by the bank. If they have not done, of course here you need to comment on that. और ये अनरिस्पॉन्डेड एंट्रीज 15 दिन के ऊपर नहीं हो सकती, बिकॉज ये क्लोज होता है, सेम डे पे स्क्वायर ऑफ होगा. सो अगर वो 15 दिन के ऊपर है, विच मीन्स देयर इज अ प्रॉब्लम. मे बी सम एडजस्टमेंट एंट्री दे हैव पास्ड, और मे बी सम अदर थिंग्स आल्सो कैन बी हैपन. सो लार्ज ट्रांजैक्शंस जब भी होंगे तो आपको वो देखना पड़ेगा कि कोई विंडो ड्रेसिंग तो नहीं किया है इसमें, बिकॉज पॉसिबल है कि उसमें बैलेंसेस दिखाने के लिए they must have done some transfers from other account or so. So please see if you are having a treasury operation branch, then of course you need to see this clause carefully. Second is branch maintains an account with RBI. If they are maintaining, answer if yes, then entry again the same thing you have to follow in this clause also. आरबीआई के साथ में भी अगर उनका बैलेंसेस है, एंट्रीज कब हो रही है, कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है, कब रिकॉर्ड हो रही है आफ्टर द ईयर एंड इन द रिलेशन टू द करेंसी चेस्ट ऑपरेशन. सो ये भी आपको पूरे अच्छे से चेक करना है. एंड देन यू हैव टू रिव्यू द रिकंसिलेशन आइटम कंपेलिंग एमओसी एंड स्पेशल अटेंशन आइटम. अगर आपको लगता है कि उसमें कोई चेंजेस है, इफ यू फाइंड इट, ऑफ कोर्स एमओसी विल बी देयर फॉर दिस क्लॉज आल्सो. Third clause is money at call and short notice. This is generally for the it's not applicable only to the dealing with treasury branches. आपको ये मिलेगा, otherwise other branches में नहीं मिलेगा. Investment, if you are outside branch है तो आपको उसमें मिलेगा कि investment अपनी बैंक ने कितना किया हुआ है, otherwise not applicable as SB are appointed locally for branches outside India. Outside India की branch आपको नहीं देंगे, वहीं पे locally देंगे. So generally it is not applicable. Fifth clause, which is very important, and here you need to focus more on it. It is about advances. Whatever you have checked till now the time is report it to the proper in the proper clauses. So for advances, the first thing you need to select the sample. क्या sample लेना है, कितना लेना है, this is all depends on the size of the branch. It is not like कि मेरे को 40-50% ही audit के लिए percentage होना चाहिए. Here the first criteria is आपको क्या लेना है. आपके sample में वो accounts तो आने ही चाहिए जो लार्ज एडवांसेस है. और लार्ज एडवांसेस की डेफिनेशन क्या है? माय 10% ऑफ आउटस्टैंडिंग एग्रीगेट बैलेंस, जो कस्टमर का आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, जो हमारी लोन बैलेंस फाइल में हमको लास्ट आउटस्टैंडिंग बैलेंस दिखेगा, वो बैलेंस फंड बेस का, प्लस अगर उसको कोई नॉन फंड बेस फैसिलिटीज भी है तो वो टोटल, ये दोनों मिला के अगर उस CIF का वैल्यू it is more than 10% of total advances. Suppose if branch is having a 550 crores branch, 10% is 55, और अगर 55 crores और more किसी एक CIF में है तो then definitely वो तो है ही, वो आपको पिकअप करना है, और 10 crores whichever is less. So which means अगर उसमें 55 is my higher side and 10 is my lower side. So अगर 10 crores है तो 10 crores के ऊपर के मुझे सारे ही accounts large advances में लेने हैं.
Same with if it is 100 crores then 10 crores, 50 crores 5 होगा और 10 होगा, तो whichever is less, so उसके accordingly आपको sample बनाना है. So you need to take the sample of large advances 100%. And for all accounts above the threshold, the transaction specific details to be sent and commented, to be seen and commented, whereas below the threshold, the process need to be checked and commented upon. Comments of the branch auditor on advances with significant adverse features which might need to attention of the management or SCA should be appended to the LFAR. हमने first तो 10% वाला criteria apply कर लिया, या 10 crores whichever is less, those account we picked up for our verification purpose. Now second line, इन सेकेंड लाइन में आपको ये देखना है कि मेरी इरेगुलरिटीज वाला अगर कॉलम में कोई ज्यादा इरेगुलरिटीज आपको मिलती है तो देन यू हैव टू पिक दोज अकाउंट्स आल्सो. उसके अलावा आपको लगता है कि कोई मेरा वन सीआईएफ, एक सीआईएफ में उसके बहुत सारे अकाउंट्स है एंड द टोटल इज कमिंग मोर देन, और आपके टॉप 10 बोरोवर्स के ऊपर आ रहा है, तो वो भी आपको पिकअप करना है. ऐसे में 2 अकाउंट्स, प्लीज टेक दोज अकाउंट्स आल्सो इन योर सैंपल. देन उसके बाद में अकाउंट्स आते हैं आपको हर एक सेगमेंट से. आई वुड सजेस्ट इफ पॉसिबल हर एक सेगमेंट, ब्रांच में सारे सेगमेंट होंगे, लाइक हाउसिंग लोन, वर्किंग कैपिटल लोन, स्टाफ लोन, कार लोन, देन एजुकेशनल लोन. सो यू जस्ट पिक top 10 or 15 borrowers from each and every segment. सो उसमें क्या होगा कि फर्स्ट मेरा सैंपल का क्राइटेरिया, कलेक्शन का क्राइटेरिया हो गया कि मैंने टॉप 10 बोरोवर्स उठा लिए. माय सेकंड, इफ स्टिल यू फील सो कि दिस इज नॉट इनफ एंड आई नीड टू चेक मोर, तो देन आप रेंडम बेसिस पे आपको जहां पे लगता है कि लाइक मुझे लगता है सीसीओडी में मुझे ज्यादा अटेंशन देना है, तो आई हैव पिक्ड अप 4-5 अकाउंट्स फ्रॉम सीसीओडी का फाइल से भी मैंने निकाल लिए, because I feel कि यहाँ मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है, तो that can be on a random sampling में आ सकता है. But my suggestion is that whatever the criteria you are selecting or you are opting, please write it in your audit documentation paper. Please write in your Excel like I have selected accounts based on first is top 10 borrowers, then random basis, or whatever you are following. Please write it on the paper and keep it as your audit documentation. Here in this clause, you have to report it. आपने जितना भी सैंपल लिया है वो सारे अकाउंट्स का डिटेल आपको यहाँ पे फिलअप करना है. फर्स्ट इज अकाउंट नंबर, अकाउंट नेम, balances at the year end, funded and non-funded both. So my suggestion will be, जब आप वो फाइल्स चेक कर रहे हो, साथ साथ में इस टेबल को भी आप फिलअप करते जाओ. आप अपने ऑडिट प्रोग्राम में इस टेबल को इंक्लूड करो और वहां पे इसी टेबल के अकॉर्डिंगली कमेंट्स आगे डालो. सो आपको लेटर ऑन जब भी लास्ट में आप LFAR फिल करोगे तब ये डेटा आपको रेडीमेड मिलेगा. You just need to copy and paste in your LFAR report. So first is my account number, then name, then what are my outstanding balance, funded also, non-funded also. And नीचे आपका and total outstanding जब मैंने डाला तो नीचे मेरा परसेंटेज मुझे दिखा देगा कि कितना परसेंटेज मैंने ऑडिट किया है. See, कितना परसेंटेज सेलेक्ट करना है इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है. किसी को लगता है कि मेरा 50% होना चाहिए, 60 होना चाहिए. This is not something like that. Whatever जितना भी आपने चेक किया है, it should be a complete verification. That is important. Maybe अगर आपकी ब्रांच साइज बहुत है, अगर एक ही अकाउंट्स में बहुत ज्यादा बैलेंसेस है, लोन सैंक्शंस है, तो हो सकता है समटाइम 4 और 5 अकाउंट्स में ही आपका 25-35% हो जाए. और कई बार बिकॉज ऑफ बहुत जैसे 50 lakhs के, 25 lakhs के ऐसे नंबर ऑफ अकाउंट्स होंगे, सो वहां पर पॉसिबल है कि कई बार नहीं होता है, 15% भी होता है. सो ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि इतना मुझे परसेंटेज वेरिफिकेशन करना ही है. दिस इज अकॉर्डिंग टू माय व्यू. सेकेंड इज क्रेडिट अप्रेजल. आप जो भी फाइल्स चेक कर रहे हैं, जो आपने सिंपल सेलेक्ट किया है,
वो सारी फाइल्स में यू हैव टू सी दीज ऑल पॉइंट्स. अगर इनकी कोई भी नॉन कंप्लायंसेस है, like first is what in your opinion are the major shortcomings in credit appraisal etc. So यहाँ आपको क्या डालना है जब आपने फाइल वेरीफाई करी होगी. We all know that loan document should be a complete. What does it mean complete? Which means the document should be filled properly, signed properly by the duly authorized person. That is important. And then proper verifications के साथ में मैनेजर ने उसको फाइल में रखा है. But most of the time it has been observed that the documents are not filled properly. सिर्फ एक हमने बोरोअर का साइन ले लिया और उसको फाइल में रख दिया है. उसमें हाफ ऑफ द इंफॉर्मेशन हमने फिलअप ही नहीं करी है. और जब आप पूछोगे मैनेजर को तो बोलोगे ठीक है ना, ये तो जब भी होगा हमारी सेफ्टी के लिए है, हमने साइन करके रख लिया है बोरोअर से, so there is no need to worry, वो तो हम कभी भी फिल कर देंगे. It should not be there. अगर ये नहीं है इस तरह की उनकी रेगुलर प्रैक्टिस है. सी 1 और 2 अकाउंट्स में अगर आपको मिला और बाकी आप फॉरगो करते हो, इट इज योर चॉइस. बट अगर ये प्रैक्टिस है तो यू शुड राइट इट हियर. देन सेकेंड शॉर्टकमिंग्स कैन बी लाइक इंस्पेक्शन, प्री इंस्पेक्शन रिपोर्ट, पोस्ट इंस्पेक्शन रिपोर्ट जनरली नहीं है, या फिर है तो भी सिर्फ ऐसे ही ब्लैंक पेपर डाल के रखा हुआ है. तो इट्स अ कॉमन इरेगुलरिटीज जो आपको लगता है कि ये नहीं होनी चाहिए. और मेजर लेवल की अगर कोई है तो जब आप लोन सैंक्शन हुआ, रिव्यू हुआ, रिन्यू हुआ, उसमें आपको क्या लगा कि दिस इज अ मेजर शॉर्टकमिंग्स, या हमने लॉ को वायलेट किया है या डाइवर्ट किया है. सो स्पेशल अटेंशन यू शुड कीप ऑन रीस्ट्रक्चरिंग अकाउंट्स फर्स्ट अगर कोई हुए हैं तो, बिकॉज रीस्ट्रक्चरिंग के आरबीआई के नॉर्म्स अलग है. whether they have fulfilled it or not, proper norms के थ्रू हुआ है या नहीं हुआ है. फ्रेश लोन सैंक्शन के टाइम पे, एडहॉक लोन अगर बार बार सैंक्शंस हुए हैं तो वो आपको देखना है. और कंप्लायंसेस ऑफ सूटेबल सर्कुलर टू बी इंश्योर्ड. सर्कुलर्स आपको ब्रांच में मिलेगा, आप देखो. अगर वो सर्कुलर्स को भी फॉलो नहीं किया गया है देन ऑल्सो इट इज अ पॉइंट फॉर द डिस्कशन एंड पॉइंट फॉर द कमेंट्स इन दिस क्लॉज. Second is any case of quick mortality in accounts. If you find so, then details of such accounts may be provided in the following manner, like with the account number, name and balance at the year end. What is a quick mortality? If any account goes NPA within the year, like account the loan was sanctioned maybe 10 months before and the account goes NPA even after 10 months. So within the 12 months, within the year, it is not like financial year. Like ऐसा नहीं है कि अप्रैल के बाद मेरा सैंक्शन हुआ और उसके बीच में ही होना चाहिए. हो सकता है मैंने वो लास्ट जनवरी में सैंक्शन किया था और वो जुलाई में हो गया, तो वो भी मेरा ईयरली आ जाता है. सो विद इन द 12 मंथ्स, सैंक्शन के 12 महीने में अगर कोई अकाउंट एनपीए जाता है तो दैट इज अ केस ऑफ क्विक मोर्टेलिटी. ऐसे अकाउंट्स पे ज्यादा ध्यान देना इसलिए जरूरी है कि या तो प्रॉपरली सैंक्शन नॉर्म्स फॉलो नहीं किए गए थे, या फिर ऑब्जर्वेशन वाज नॉट करेक्ट ऑफ द बोरोअर्स, इसलिए वो अकाउंट 12 मंथ्स में ही एनपीए हो गया. या तो हमने पहले उसको रिव्यू अच्छे से नहीं किया, उसका सिविल चेक नहीं किया, मतलब समथिंग वाज मिसिंग. दैट्स द रीजन दिस केस हैज दिस loan account goes NPA. So that information you need to report it here. Next is whether in borrower account the applicable interest rate is correctly fed into the system or not. See, it's a maybe human error भी हो सकता है. जब आप उनसे बात करोगे तो manager तो always you will get the answer like everything is in system, we don't do anything. But whenever the new loan has sanction, the person has to enter all the detail as it is written in the sanction letter in the CBS system. So जो system में CBS में data feed कर रहा है, that's a human. So it can be possible कि उनसे
कुछ मिस्टेक हो जाए, इंटरेस्ट रेट वाज 16% एंड ही मस्ट हैव राइट ओनली 6 और 60 व्हाटएवर। सो ऐसा कोई केस है, आपको फ्रेश लोन के केसेस में एक बार कुछ टेस्ट चेक बेसिस पे कुछ सैंपल उठा के देखना चाहिए। सिस्टम के मास्टर में आप लॉग इन करके देखो कि ऑल द इंफॉर्मेशन जो सैंक्शन लेटर में दी है वो ही प्रॉपरली है या नहीं है, और मेकर चेकर कॉन्सेप्ट था या नहीं था, कैसे उन्होंने, आपने क्या चेंज किया, उन्होंने मतलब अगर कोई चेंजेस सिस्टम में हुए हैं, मास्टर में हुए हैं, तो किसके बेसिस पे हुए हैं, विदाउट द अप्रूवल हुआ है या कैसे है। सो वो इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे डालनी है। Whether the interest rate is reviewed periodically as per the guideline applicable to floating rate loan linked to the MCLR EBLR. See here what happened is, so in this year, suppose my FD rates, take an example, my FD rate has been changed. अप्रैल में पॉसिबली 7% थी, अभी 6 हो गई या 8 हो गई या whatever the changes has happened during this year. So आप एक रैंडम बेसिस पे, टेस्ट चेक बेसिस पे कोई भी अकाउंट में जिसमें रेट चेंज हुई है, उस प्रोडक्ट में एक दो अकाउंट सिंपल बेसिस पे मैन्युअली कैलकुलेट करके देखो कि अगर इसमें रेट चेंज हुई है, इस दिन से हुई है, तो कितना इंटरेस्ट डेबिट या क्रेडिट होना था और एक्चुअली में कितना हुआ है। सो उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि वेदर डेविएशन इज देयर और नॉट, स्पेशली इन केस ऑफ एफडीज और लोन, हाउसिंग लोन की रेट्स जब चेंज होती है, उसमें दिस नीड टू बी चेक्ड प्रॉपरली। हैव यू कम अक्रॉस केस ऑफ फ्रीक्वेंट रिन्यूअल, रोल ओवर ऑफ शॉर्ट टर्म लोन्स? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। सो आपको अगर लगता है कि कोई अकाउंट है जिसमें वेरी फ्रीक्वेंट रिन्यूअल्स हो रहे हैं, लाइक 3-3 महीने में शॉर्ट रिव्यूज हो रहे हैं या 6 महीने में हमने उसको कर दिया, सो ऐसा अगर कुछ आपको दिखता है तो देन यू हैव टू सी वेरी केयरफुली, because review oblique renewal, it is written in the IRIC norms, and if you start arguing with the bankers, they will say that the language is review oblique renewal, so I have reviewed my account, so my account doesn't go NPA even after 180 days. So the language is not like that. So आपको अगर लगता है कि किसी अकाउंट में शॉर्ट रिव्यू बार बार हुए हैं, so वो अकाउंट्स आपको चेक करना है, और वो अगर मोर देन 180 डेज है तो डेफिनेटली देयर इज नो क्वेश्चन, इट इज ऑफ कोर्स एनपीए। बट अगर विद इन द 180 डेज भी अगर ऐसा कुछ है, ऐसे कोई आपको मिलता है, तो देन यू हैव टू रिपोर्ट इट हियर। बट सी दैट अगर आप वहां पर रिपोर्ट कर भी रहे हो तो आपको एमओसी पास करोगे तो एनपीए भी क्लासिफाई करना पड़ेगा। यहाँ डालोगे कि यस इट इज मोर देन 180, so then you have to pass MOC also. Whether correct and valid credit rating, if available, of the credit facility of the bank's borrower from RBI accredited credit rating agencies has been fed into the system or not. हमने सिबिल ली, और इन केस ऑफ मोर देन 5 crores क्रेलिक रिपोर्ट्स भी होती है, वो रिपोर्ट्स देखो, आप उसको वेरीफाई करो, और उसमें जो मार्किंग दी है वही सिस्टम में डाली है या नहीं डाली है। बिकॉज अगर इट इज मोर देन 800 है या 600 के नीचे है, उसको कितना लोन किस तरह से सैंक्शन होगा बेस्ड ऑन हिज और हर क्रेडिट वर्दीनेस। सो आपको वो देखना जरूरी है कि जो क्रेडिट रेटिंग हमारे डॉक्यूमेंट्स में हमको मिल रही है वो ही सिस्टम में फेड है या नहीं है। Did the bank provide loans to the company for buyback of shares or securities? This clause will be applicable if your branch is a commercial branch or corporate branch, जहां पर कंपनीज को लोन्स हमने सैंक्शन किए हुए हैं। सो वहां पर आपको ये देखना पड़ेगा कि कंपनीज ने बायबैक ऑफ शेयर्स के लिए भी दिया है क्या, और अगर है तो आपको सैंपल सेलेक्ट करके उसका एंड यूज ऑफ फंड इंश्योर करना है। एक सर्टिफिकेट to the extent from the borrowers, you need to take it with the file it should be, and you need to report all loan sanction for buyback of shares of securities. अगर है तो यहाँ आपको सारे अकाउंट्स रिपोर्ट करना है।
Next and very important, as I discussed little bit in review renewal case, review, monitoring, supervisions. So account is satisfactory or not, it is a healthy or not, it is functioning properly or not. This need to be report in this clause here. First is, if I talk like, is the DP properly computed? So this is a big question. भले हम ये बोलते हैं कि हम आंसर देंगे कि yes it has been calculated properly और monthly calculation कर रहे हैं, बराबर है. But what if my stock statement is not coming since so many months? आपने अगर देखा कि 6 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में stock statement आ रहे हैं, how can I say that DP properly computed? Because this exercise should be done on a monthly basis. There is a formula for the DP calculation. Drawing power calculation के बहुत सारे challenges भी हैं, like treatment of creditors. What are the methods are following by the bank? First, you need to take that from the bank that आप DP कैसे calculate करते हैं. Some banks are doing trade creditors को हमने sanction के time पे जितने creditors ले लिए थे, next month से हम उसका balance और increment figure ही लेंगे, because that much of credit has been allowed when it is sanctioned. This facility was sanctioned. So the treatment of creditors is important to see that. Debtors, अगर कोई inter branch transfers है तो that should be deducted. Sometime borrowers का stake ये होता है कि because I have done the transaction on an arm's length, so why you are deducting from my debtors, because it's my genuine debtors. As good as I am dealing with some other parties, I am dealing with the same with my sister concerns. So these are the challenges जब हम DP calculate करते हैं. स्टॉक का पोजीशन क्या ले रहे हैं, स्टॉक स्टेटमेंट आ भी रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, तो ये थोड़ा सा आपको प्रॉपरली देखना चाहिए. एंड आई वुड से दैट यू शुड पिक अप अ लेटेस्ट स्टॉक रिपोर्ट आल्सो. और अगर स्टॉक ऑडिटर रिपोर्ट ने उसमें कुछ भी कमेंट दिया है विच इज एन एडवर्स इन नेचर, ऑफ कोर्स योर एक्शन आल्सो शुड बी देयर इन योर रिपोर्ट. And in case of consortium advances, of course, DP should be determined by the lead bank and it will be circulated to other members bank also. So if you are doing audit of the lead bank, you have to see and do all the proper calculation. And if you are doing a other bank's audit, then आपको वो lead bank ने कैसे calculate करी है उसका एक copy आपके पास में रखना है. And उसके accordingly आपको अपना comments बनाने हैं. Whether the latest audited financial statements are obtained for account reviewed or renewed or not. See, इसका आंसर नो हो ही नहीं सकता अगर आप ये बोलते हो कि yes, review and renewal is done with the proper terms and conditions. Without receiving a latest audited financials, how can I comment that the DP has been computed properly, the loan sanctioned properly or reviewed or renewed properly? Because उसके financial के base पे ही हम stock का calculation और debtors का calculation करके देंगे. So this you need to see that कि latest audited financial statement आपके पास है या नहीं है. So if you are doing a audit of March 24, take the report of March 23. And for more in detail verification, what you can do is आप last 23 की जब balance sheet आपने देखी उसमें stock क्या था and उस पूरे साल के last year के stock statement भी देख लीजिए और दोनों में कितना variation. See, 5 or 10% variation is okay. It may be possible कि monthly और year end पे हमारे थोड़े changes हो सकते हैं, but it should not be more than that. If it is a huge deviation, that is an alarming situation and it's a, you can consider is a red flag or early warning signal. आपको वो account अच्छे से देखना ही है और उसके बाद ही आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हो. उस फाइनेंशियल रिपोर्ट में ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये भी देखो कि वेदर ऑडिटर हैज एनी नेगेटिव कमेंट्स आर देयर फ्रॉम द ऑडिटर्स और नॉट, या उनके नोट्स एंड अकाउंट्स में कुछ और इंफॉर्मेशन है क्या जो ऐसा लगता है कि हमारे बोरोअर लोन को या बोरोअर की पोजीशन को चेंज करती है. That also you have to see that.
And but if you have not found in the files the latest audited financial statement, आपको ये comment यहाँ तो डालना ही है कि we have not received, but it can be a question for the renewal also. So आपको ये भी देखना है कि वो renewal भी हुआ है या it is just a short review and bank is continuing with the same process. So details of next is details of cases where stock audit was required but was not conducted. As I said that we all know that more than 5 crores है तो हमको stock audit करवाना बैंक को compulsory है. So आपके यहाँ अगर कोई issue है ब्रांच में तो देखो, लेटेस्ट गाइडलाइन है जो HOK और RBI की, वो आप देख लो, उसकी कंफर्म कंप्लायंसेस चेक करो उन्होंने किया है कि नहीं किया है. और अगर इसमें कोई एडवर्स फीचर्स है, आई एम अगेन एंड अगेन टेलिंग यू, एनी एडवर्स रिमार्क इन द स्टॉक ऑडिट रिपोर्ट, definitely you should consider for your report also. Second is where stock audit was conducted but no action was taken on adverse features. Again, the first I need to check whether stock audit has done or not, and if it is done or if it is conducted, then what was the negative points is there or not, and if it is any adverse or negative remarks in the report, क्या एक्शंस लिया है या कोई एक्शन नहीं लिया गया है. Indicate the cases of advances to non-corporate entities with limits beyond that is set by the bank where the branch has not obtained the duly audited accounts of borrowers. अगर वो beyond the limit है जो उन्होंने set करी थी और उस केस में उन्होंने ड्यूली ऑडिटेड अकाउंट्स नहीं लिए हैं, तो यहाँ पर आपको उस पर कमेंट करना है. लाइक सर्क्यूलर है कि लिमिट 20 to 25 lakhs है, वेदर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ऑप्टेन और नॉट, और अगर ऑप्टेन है तो कब तक के हैं, अगर 22 तक का है तो 23 का क्यों नहीं है, एंड देन यू हैव टू कमेंट ऑन दैट. So does the branch have on its records a due diligence report in the form and manner required by RBI in respect of advances under consortium and multiple banking arrangement? If yes, list of accounts where such certificate is not obtained or not available on record. It is simple due diligence report हमको चाहिए अगर कंसोर्शियम और मल्टीपल बैंकिंग अरेंजमेंट में कोई लोन है तो. सो अगर आपके पास नहीं है, अगर वो लिस्ट ऑफ अकाउंट्स ले लो जहां पे ये रिपोर्ट्स नहीं है और वो वहां आपको रिपोर्ट करना है. Whether there is a substantial deterioration in value of security during financial year as per the latest valuation report in comparison with earlier valuation report on record. जनरली ये वैल्यूएशन रिपोर्ट या तो हम अगर सीसीओडी है तो स्टॉक का हो गया, वो हम एवरी ईयर या ऐसा लेंगे, बट हाउसिंग लोन के केस में 5 years और 10 years में हम रिपोर्ट्स लेते हैं. अगर आपको ऐसा लगता है कि देयर इज अ ड्यू for the particular security, either primary or collateral is due for the valuation, so take this, ask them to provide a valuation report. अगर उन्होंने नहीं किया है तो again it is a remark. अगर किया है तो then you have to compare जब हमने लोन सैंक्शन किया था तब क्या वैल्यूएशन रिपोर्ट थी और आज क्या है. और अगर सब्सटेंशियल डिटोरिएशन है तो देन डेफिनेटली इट इज अ पॉइंट ऑफ MOC. दिस एंड सब्सटेंशियल डिटोरिएशन कितने टाइम से है, अगर ये मोर देन है तो देन NPA के क्लॉजेस विल बी एप्लीकेबल. Whether the branch has any red flagged accounts. If yes, then whether any deviation were observed related to compliances of bank policy related with the red flag account. ये आपको रिपोर्ट एक रेड फ्लैग रिपोर्ट निकलेगी, वो अकाउंट्स देखना है, उस पर प्रॉपरली एक्शन टेकन और नॉट, उनकी बैंक की क्या पॉलिसी है रिव्यू के केस में, दैट यू नीड टू सी दैट, एंड देन इफ एनी डेविएशन इज देयर you have to report it, whatever you have observed. Comment on adverse features considered
significantly in top 5 standard large accounts and which need management attention. It can be a top 10 also. It all depend on your sample. Because अगर आपके उसमें LFAR के annexure 2 में top 10 आ रहे हैं तो आप वो लिखो, और उसमें आपने कोई adverse features नोट किए हैं तो उसके सारे कमेंट्स यहाँ आएंगे. MOC है तो डेफिनेटली वो MOC के क्लॉज में जाएगा और यहाँ भी आएगा. और अगर MOC नहीं है तो जो भी डेविएशन यू हैव ऑब्जर्व्ड, you have to provide all instances of deviation from policy of bank relating to the sanctioning of advances, or to comment related to any adverse features which is in auditor's opinion need management attention. Like अगर मुझे लगता है कि processing charges is not recovered, मेरा लीकेज का MOC का भी पॉइंट आता है और यहाँ पे भी कमेंट्स आता है. If you feel so कि account is not very poor turnover, और it can go, आज नहीं है but it can go in NPA in futures because उसके हमने financials check किए हैं, drastic reduction है turnover में, या anything which you feel so कि it is important and it can a negative or adverse feature for particular large advances, so you need to report here. Asset classification, provision of advances and resolution of stress assets. Till now we have discussed review renewal. We are discussing about the advances part. So first new loan we discussed, then review renewal, and the third is asset classification like NPA classification. So whether the provision is required more or not, what you have seen, whether the asset was a stress assets, क्या उसके norms है, that you have to see in this points. So branch identified and classified advances into standard, substandard, doubtful, loss assets through the computer system without manual intervention. The important thing is here is without manual intervention. So nowadays every bank has following the same process. उनके सारे NPA classification थ्रू ऑटोमेटेड सिस्टम ही होते हैं, CBS के थ्रू ही होते हैं. अगर आपको ऐसा कोई केस मिलता है जहां पर उसके साथ कोई मैन्युअल इंटरवेंशन है या उसके थ्रू वो एसेट्स को सब स्टैंडर्ड के बजाय हमने स्टैंडर्ड में कर दिया, ऐसे कोई केसेस आपको मिलते हैं तो आपको वो देखना है. आप अगर SMA2 अकाउंट्स ले लो, सो जो अकाउंट कंटिन्यूअसली इरेगुलर में जा रहा है, so those accounts can be a sample for you for particularly this class. आप classification of advances देखो, उसमें standard to substandard, substandard to standard भी है. Even in NPA में भी जो 3 categories है अपनी, substandard है, doubtful है, loss assets है, इनके भी internal classifications change हो सकते हैं. जरूरी नहीं है कि सिस्टम ने जो किया है वो ही करेक्ट हो. सो आपको भी मैन्युअली एक बार चेक करना है कि whether it is a system driven or some manual intervention has done by the manager. May be possible some accounts को NPA से बचाने के लिए he must have done some transaction that also can classify those accounts in NPA. So classification will be changed accordingly. Classify the account into SMA 0, 1 and SMA 2. So whether auditor disagree with the branch classification, if yes, then details with the reason to be given here. आपने MOC पास करिए तो भी यहाँ पे आएगा कि अगर हमको लगता है कि हमको SMA 0 में नहीं है, वो अकाउंट्स SMA 1 में है, या जो हम आप IREC हिस्ट्री निकालेंगे तो IREC हिस्ट्री से आपको डे वाइज उसका स्टेटस पता चलेगा पर्टिकुलर अकाउंट का. तो आपको वो अकाउंट पता चलेगा कि SMA 0 में है, 1 है या 2 है. और by verification, if you feel so कि that account should classify in SMA 2 rather than SMA 0, so आपको यहाँ पे reason report करना है. Whether required changes have been incorporated, suggested in the MOC or not. So जो भी suggestions हमने दिए, जो भी remarks हमने अभी तक दिए थे, वो सारे if required है MOC के लिए, तो क्या वो हमने दे दिए हैं क्या? That is also to be written here, to confirm here that the MOC which has the financial implication and or change in the asset classification is suggested by the auditor. Next is the list the accounts with outstanding in excess of rupees 10 crores.
which we say is large borrowers, which have either been downgraded or upgraded during the year and the reason thereof. So आप पूरे ईयर का अगर एनपीए मूवमेंट देखेंगे तो उससे आपको पता चलेगा कि कोई अकाउंट जो पहले एनपीए क्लासिफाई कर दिया था उसको हमने अभी रेगुलर कर दिया है, या जो एनपीए में अभी स्लिप हुआ है. So downgraded or upgraded, both the information you need to report here, and especially in case of outstanding in excess of 10 crores. Whether RBI guidelines on income recognition and provision have been followed or not. IREC norms, that you have to report it here. If you follow somewhere like the norms has not been followed, then you have to report it here. कोई भी norms हो सकता है, मे बी asset classification के लिए है, वन बाय वन. कोई assets हो सकता है सीधी हमारी सब स्टैंडर्ड से लॉस में चली जाए बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी नहीं है और अनसिक्योर्ड लोन है. So अगर ऐसे कोई classifications हैं जहां आपको लगता है कि IREC norm has not followed, then you have to write it here. Whether the branch has reported account restructured or refaced during the year to controlling authority to the bank. Whether the branch has reported जो भी accounts उन्होंने restructure किए हैं, उन्होंने वो accounts controlling authority को report किए हैं या नहीं किए हैं. Answer always should be in yes, because restructure generally won't be possible unless until your controlling authority is aware about and they've given the permission. So आपको अगर answer is no, then of course your comment should be there. Whether the RBI guideline for restructuring on all such cases have been followed or not. Read the RBI guideline for the restructuring of account very carefully in respect of maybe some special package of RBI for restructuring permitted most of the time. We have seen in COVID cases में, COVID में RBI has launched a special scheme. अब तक तो I think उसका effect वैसे भी निकल गया है, but still if you feel कि आपको लगता है किसी account में हमने COVID में वो account restructure किया था and अभी उसका process कैसा है, account is satisfactory or not, so that you have to see. So all restructure account अगर during the financial आपके कोई हुए हैं तो वो accounts आपको अच्छे से देखना है. Whether the branch complies with the regularity stands for resolution of stress assets, including the compliance with board approved policy in this regard, tracking or reporting of defaults of resolution purpose amongst others. So branch ने stress assets को से related जो भी informations है, जो भी compliances है, वो complete करी है कि नहीं करी है, and to inquire about those accounts that has to be exposure of 2000 crores and above, and if अगर वहाँ पे है answer, if it is yes, then ensure prompt reporting under CRILIC, because CRILIC में ये reporting is important. To report in case such accounts is under SMA category for 180 days continuously. Whether the upgradation and non-performing advances is in line with the norms of RBI or not. अगर हम किसी account को NPA से regular में लेके जा रहे हैं, तो then you have to see that the proper norms of RBI has been followed or not. और अगर कहीं पे deviation मिलता है, तो no need to say that we need to report here. और अगर आपको लगता है कि नहीं account unnecessary regular में गया है and according to you it's still in the NPA, so you can pass MOC also. Whether the auditor disagree with upgradation of account, if yes, give reason thereof. MOC and the reason for the disagreement. Whether there are any accounts wherein process under IBC is mandate but not initiated by the branch. अगर है तो ठीक है, but this is
was not applicable since forbearance was permitted by RBI. बट अगर ऐसे कोई भी अकाउंट्स आपको मिलते हैं तो आपको आइडेंटिफाई होते हैं वेयर IBC process has initiated, so you need to comment that adequacy of provision on that accounts. If any accounts the process of IBC is initiated by any of the creditors including bank, ऐसा कुछ है तो then the information should be there. Have appropriate claims for credit guarantee, if any been duly lodged and settled. This information you can get from the bank and give details of claim if rejected. Whether the rejection is appropriately considered while determining the provisioning requirements. So this is generally a comment. अगर कोई rejections हुए हैं तो उनके claim कब accept हुए, कितने हुए, क्या balance है, मैंने कितना lodge किया था, उसके सामने accept हुआ है, settle हुआ है, reject हुआ है. So that table should be given here. Is the branch prompt in ensuring execution of decrees, opt-in for recovery from the defaulting borrowers? So these all are applicable for the NPA. I mean, as a classification we are discussing. So with the review, renewal, fresh loan cases, you have to see the classification of NPA also. So this information you will get it from non-performing accounts. So uske case mein we are discussing that ki branch prompt is the branch is prompt in ensuring the execution of decrees, opt-in for the recovery from the defaulting borrowers. Give age-wise analysis of decrees, opt-in and pending execution. This is a simple. So whether in the case concluded the recoveries have been properly appropriated against the principal or interest as per the policy of the bank, then the same thing also you have to report here. You have to obtain recovery policy of the bank first and understand appropriation of recoveries कैसे होगा, कैसे कैसे हम shift करेंगे. And in case of error in appropriation, appropriate MOC also should be suggested. Recovery हुई है, हमने stress assets में डाला था, अभी उसको कैसे उसका ट्रीटमेंट देना है, वापस मुझे उसको इनकम में कहाँ रिपोर्ट करना है, कैसे करना है. The recovery policy will be there, the documents will be there with the bank if any recovery has come from the stress accounts. List of borrowers with details of LCs devolved or guarantees invoked during the year. अगर ऐसी कोई devolved है या guarantee invoked हुई है this financial year में, so that information you have to write it in the proper format with serial number, invocation date, party name, beneficiary name, amount क्या था, recovery की date क्या थी. List of borrowers where the LC devolved or guarantee invoked but not paid with amount thereof. The same format you have to reply here. List of instances where interchangeability between fund-based and non-fund based facility was allowed subsequent to the development of LC or invocation of BG. Because it happens that हम जो parties को non-fund देते हैं उसकी fund-based facility भी होगी. Because जो borrowers आपके बैंक में transactions नहीं करता या उसका account नहीं है, bank will not issue a non-fund based facility. So in case of ऐसे कोई instances आपको मिले हैं जहां पर interchangeability हुई है कि fund base से हमने थोड़ा non-fund base में भी shift कर दिया या उसके बाद LC जब invoked हो गई थी उसके बाद. So अगर आपको ऐसा कुछ मिलता है तो आपको वो information यहाँ पर देनी है कि any interchangeability was allowed only after devolvement of LC or invocation of BG. So the first part was assets we have discussed. Now the second is a liability. So Virag, can we have a question related to advances first and then I can move further?
Virag, are you there? Yes, ma'am. Yes. Okay, so because I'm not able to see the question wala screen. Ma'am, as of now, there is only one question. How do Okay. risk assessment and fraud control? Sorry, come again. How do we do a risk assessment and a fraud control? Risk assessment and control. See, अगर आपके पास में मतलब there are some control checkpoints, internal control points are there. You have to comment on that whether the how much risk is with there, and fraud assessment के लिए जो points है ICOFR में, that you have to see because it's a long and lengthy process. One-liner answers can't be. Right, ma'am. Okay, so So there is yeah, one more question came. Can you okay. please say which are the financial commands to generate such advanced report? Commands I As bank seriously officer do I not don't give have any. such report for verification. Which report? Uh, Ma'am, if you can open the question tab, though, so it I'm will not be able to see that actually because I'm able to see only my camera and my screen. That's it. a control panel. On control panel, there is a question tab from there. I'm not able to see that. Seriously, not able to see that. Okay. Yeah. Can you please say which are the Finacle commands to generate such advanced report? Okay, see, Finacle commands, frankly, I don't have handy with me because I have a team with me जो मेरे को commands report generate करके देते हैं, frankly. So commands abhi nahi hai, but you please ping me in a person. Definitely, I'll ask with my team and will revert back to you. As bank officers do not give such report for verification. I know that तो always they will say हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी generate नहीं होता है. But I can say is हर एक बैंक जो भी जो closing manual देते हैं ना, उसमें last में important commands होती है. और अगर वो नहीं भी है ना तो आप उनसे मांग सकते हो आपकी जो भी फिनाकल की या बैंक्स 24 जो भी सॉफ्टवेयर इज यूजिंग बाय द बैंक उनकी कमांड्स आप उनके वहां से निकाल सकते हो. तो आप उनको वो बोलो कि कमांड्स या तो मुझे दे दो, अदरवाइज आप उनको ब्रांच मैनेजर को पूछेंगे तो दे हैज टू सपोर्ट, दैट्स नो ऑप्शन. Finacle commands are reports like upgradation, NPA statement, NPA ledger, cash book. एंड लाइक अपग्रेडेशन, ये तो आप एनपीए मूवमेंट रिपोर्ट निकालिए. एनपीए मूवमेंट की रिपोर्ट में आपको ये सब मिलेगा. और आप लास्ट ईयर के एनपीए का निकाल लो, अभी का निकाल लो, उससे भी आपको पता चल जाएगा. अगर स्पेशल कमांड से वहां से नहीं दे रहे हैं आपको, लास्ट ईयर की मैंने एनपीए मूवमेंट रिपोर्ट निकाली, करंट ईयर की निकाली, तो मुझे वैसे भी पता चल जाएगा. और करंट ईयर की एनपीए मूवमेंट में आपको सब मिलेगा कि कौन सा अकाउंट मेरा अपग्रेड हुआ है या लेजर है. दिस इज तो सिंपल. आई थिंक ये इन्फॉर्मेशन तो आपको मिल सकती है. नॉर्मल बीजीएल का उनका जो रिपोर्ट जनरेट होता है फोल्डर, फिनाकल में भी एवरी डे वाइज एक फोल्डर जनरेट होता है, लास्ट डे पे रहेगा. सो जो भी फर्स्ट को रिपोर्ट जनरेट होगी अभी 1 अप्रैल को, तो आप उस दिन के सारे फोल्डर्स चेक कर लो, आपको मिलेगी. And still, if you want particular command, you just ping me in person. Definitely, I'll ask to my team and will get back to you. Okay, so I think there is no any other question. Yes, ma'am. So, Yes. yeah, so we can move towards the liability. So in liability, we know that most of the deposits will be there in the bank's balance sheet. So whether the scheme of automatic renewal of deposits apply to the FCNR deposits. If yes, ये आपको check करना है. Whether the such deposits have been renewed, report whether the branch has satisfied itself as to the
non-resident status of the depositor, and whether the renewal is made as per the applicable receipt, soft copy have been dispatched or not. That process, the whole process, you have to check it. आप उनको पूछ लीजिए कि ये पूरी प्रोसेस आप कैसे फॉलो करते हैं, क्या पॉलिसी है बैंक की, एंड अकॉर्डिंगली यू विल बी एबल टू कमेंट ऑन दैट. So is the branch complying with the regulation on minimum balance requirement and levy of charges on non-maintenance of minimum balance in individual saving account? Generally, it is done automatically by most of the banks, but फिर भी आप एक random basis पे check कर लो कि किसी भी borrower किसी भी saving deposits में या करंट अकाउंट्स में कोई मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट से नीचे अगर कोई अकाउंट गया है तो उसमें वो चार्जेस लेवी हुए या नहीं हुए हैं. The third is important. I have covered only 2-3 points of related to deposits. Otherwise, तो senior citizen का FD renewal का, that is all the clauses are there. But I have included most important of related to NRI deposits. One more thing I can tell you related to deposits is we have observed in our last audit that auto renewal के case में, if any loan has been sanctioned against the FD, and if that loan has been booked through their app, mobile app or something, internet banking के through या ऐसा, without going to the bank, if they have done the loan wala transaction on FD, when FD was auto renewed, the interest rate was not changed accordingly. Say example, if अगर 3 साल पहले मैंने कोई लोन अगेंस्ट FD लिया था और मेरी 3 साल की FD थी, so that time interest rate was maybe 5%. So my loan interest rate was fixed 5 plus 2, 7%. And जब आज वो renew हुई है FD, so आज की डेट में जब FD renew होगी तो it may be 7% or 7 point something percent. So my loan interest rate also should increase by 7 plus 2, it should 9, but it was not in the system. So ऐसे cases में of course income leakage भी बनता है, and then there is a system flaw also कि while renewal, auto renewal के case में rates are changing or not. So third, there are questions related to profit and loss account also in LFAR. So first is, has the test checking of interest, discount, commission, fees revealed excess, short credit of a material amount? If so, give details thereof. So ये जब आप account loan accounts verify करोगे तो आपको पता चलेगा interest हमने properly अर्न किया है या नहीं किया है बैंक ने, कोई प्रोसेसिंग चार्जेस का वेवर तो नहीं है या वो स्किप तो नहीं हुआ है, डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस है, देयर आर लॉट ऑफ पेनल इंटरेस्ट, बहुत सारी चीजें हैं. सो वो सारे इनकम इज करेक्टली एक्यूरेटेड है कि नहीं है सिस्टम में, दैट यू हैव टू चेक. अगर कोई शॉर्ट है तो भी आपको रिपोर्ट करना है, इनफैक्ट एक्सेस है तो भी रिपोर्ट करना है. सो आप सर्क्यूलर ले लो एचओ का, आपको उससे काफी चीजें क्लियर हो जाएगी. Has the branch complied with the income recognition norms prescribed by RBI? The auditor may refer to the instruction of the controlling authority of the bank regarding charging of interest on non-performing assets. NPA के केस में अगर हमने अभी NPA किया है तो NPA का इनकम भी हमको रिवर्स करना पड़ेगा जितना हमको रियलाइज नहीं हुआ है. सो ये आपको सैंपल बेसिस पे चेक करके मिल जाएगा कि एनपी अगर जो इस साल में एनपीए हुए हैं, whether their interest reversal has done properly or not. Has the test check of interest on deposits revealed any excess or short debit? Same thing as good as short credit. अगर short debit है तो भी आएगा और credit है तो भी आएगा. Does the bank have a system of estimating and providing interest accrued on overdue, matured, unpaid, unclaimed term deposit, including in respect of decreased depositor? See, in most of the banks, term deposits are auto-renewed nowadays. अगर लेकिन कोई है overdue deposits report आप देख लो
उसमें आपको लगता है कि ये एफडी ऑटो रिन्यू नहीं हुई है एंड देयर इज अ ड्यू फॉर या तो वो पार्टी कस्टमर आकर लेके जाए या उसके इंस्ट्रक्शंस के लिए वी आर वेटिंग, तब तक हम उसको सेविंग बैंक में रखकर सेविंग बैंक का इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं. बट सी दैट व्हाट इज द बैंक पॉलिसी, वो क्या कर रहे हैं ओवरड्यू और मैच्योर्ड पॉलिसीज का, whether they are calling the depositors और उनको वापस करने के लिए क्या actions है, that the process you need to see that. Then fourth is a general and miscellaneous column. In general, maybe gold, bullion and security items पे we need to comment on that. First point. So does the system ensure that gold and bullion is in effective joint custody of two or more official as per the instruction of the controlling authority of the bank? Just like cash, maker checker concept is there. There will be a two key. So आप check कर सकते हो, उनको बोलो मुझे देखना है कौन लेकर जाता है. यहाँ पर सिर्फ yes और no नहीं लिखना है, आपको वो ऑफिशियल का नाम भी लिखना है. कौन ऑफिशियल है, उसकी क्या डेजिग्नेशन है और किसके पास में जॉइंट कस्टडी है. और आपने जब वेरीफाई किया तब वो दोनों पर्सन आपके साथ आए थे या एक ही पर्सन दोनों की लेकर आपके साथ आया था. That much of that, to that extent you need to go and verify it. Does the branch maintain adequate records for receipt, issue and balance of gold bullion and updated regularly? You can see the register in respect to that. Does the periodic verification reveal any excess or shortage? मिला है क्या उनको स्टॉक में जब उन्होंने पीरियोडिक वेरिफिकेशन किया कि बुक में कुछ था और एक्चुअल में जब देखा तब कोई शॉर्टेज था या एक्सेस था. अगर ऐसी कोई डिस्क्रिपेंसीज आपको मिलती है तो देन डेफिनेटली इट शुड बी रिपोर्टेड टू द कंट्रोलिंग अथॉरिटी ऑफ द बैंक. और अगर उन्होंने नहीं की है तो दैट कंप्लायंसेस हैज बीन फुलफिल्ड और नॉट, दैट यू हैव टू चेक. Does the system of the bank ensure adequate internal control over issue and custody of security items? Like term deposit receipt हो गया, draft हो गया, pay order, check books, traveler checks, gift checks, etc. So ये इस पे properly internal control system is there or not? कहाँ पे रख रहे हैं, उसकी custody कहाँ है, कौन किसकी authority में, who is the person? Same thing again, maker checker is there or not? और whether the proper system being followed by the branch or not. और अगर आपको कोई मिसिंग या लॉस्ट आइटम मिलती है तो देन आपको यहाँ पे रिपोर्ट करना है. सो एचओ के क्या इंस्ट्रक्शन है इस तरह से इनको डील करने के लिए, दैट यू हैव टू सी. फिजिकल वेरिफिकेशन आपने किया इंक्लूडिंग स्टैम्प, तो आपको कुछ मिला क्या. और आपने जब लास्ट सिक्योरिटी आइटम्स इशू चेक किए थे, रिव्यू किए थे, अगर बैंक ने किए और उनको कुछ मिला तो उन्होंने कंट्रोलिंग अथॉरिटी को रिपोर्ट किया है या नहीं किया है. एनी लेकुना इफ इट इज ऑब्जर्व्ड इन द होल सिस्टम, you have to definitely report it because this can be a fraud prone area जहां से maybe if anything is missing out of it, there can be a very big concern for the bank particularly. Then second is books and records. Whether there are any software either manually or otherwise used at the branch which are not integrated with the CBS system. Like earlier it was forex system or some non-fund based facility system was not integrated with the CBS. So अगर आपकी branch में ऐसा कोई भी सॉफ्टवेयर है जो CBS से कनेक्टेड अगर नहीं है and they are maintaining a separate software में which is not linked to the CBS, then definitely you have to report it because numerous softwares implemented by the bank. So you have to review that software which has an impact on financial transaction, reporting or any core activity which have not been integrated. So आपको ये चेक करो कि whether the system is linked with the SWIFT system or not.
स्विफ्ट सिस्टम वी कॉल जनरली फॉर द ट्रांजैक्शन, जो मैसेजेस हम भेजते हैं, तो वो सिस्टम सीबीएस से कनेक्टेड है या नहीं है. अगर नहीं है, बिकॉज आफ्टर आई थिंक सिंस 5-6 years now every bank is connecting and linking with the CBS system. So अगर नहीं है तो then there is a report you need to report in and can be a red flag, और वो अलग से जो रिपोर्ट जनरेट हो रही है वो भी आपको प्रॉपरली चेक करनी पड़ेगी. In case the branch has been subjected to IS audit, whether there are any adverse features reported and have a direct or indirect bearing on the branch accounts and are pending compliances, if yes then give details. अगर उस ब्रांच में IS ऑडिट हुई है, सो आप पहले तो उसकी रिपोर्ट ले लो, अच्छे से पढ़ो, कोई एडवर्स फीचर्स है और उसमें उसका इम्पैक्ट ब्रांच में बहुत ज्यादा है, और वो एडवर्स फीचर्स के रिमार्क्स, उनकी जो पेंडिंग कंप्लायंसेस थी वो कंप्लीट हुई है या नहीं हुई. अगर वो compliances is still pending, then also you have to write it here that compliances has not done, and the same negative remarks you have to write it here also. And if they done the compliances, then no issue, simple, you can write it, yes, IS audit has been carried out and necessary compliances explanation wherever it was required, it has been obtained and issued a report in terms of in IS audit reports. So that comment should be properly written here. Whether branch is generating and verifying exception report at the periodicity as prescribed by the bank. Exception reports हर एक बैंक में आपको generate होती है, तो आपकी ब्रांच में भी हो रही है नहीं हो रही है वो आप देखो, होती है तो take a list of exception report prescribed by the bank, and sample basis पे you can verify whether the branch is following the instruction issued by the bank in respect to the generation and verification of such reports. Review that such all the transaction maybe on sample basis will it definitely will aid the auditors in ascertaining the nature of transaction and risk is involved. Whether the system of bank warrants expedition compliance of daily exception report, and whether there are any major observations pending such compliances at the year end. Same thing, अगर कुछ है आपने रिव्यू करो, देखो कि उन्होंने कंप्लीट किया है कि नहीं, कोई पेंडिंग कंप्लायंसेस अगर थी, और अगर नहीं है तो देन अगेन आपको यहाँ पर भी इनकॉर्पोरेट करना है. Whether the bank has laid down procedure for manual intervention to the system generated data and proper authentication of the related transaction arising therefrom along with proper audit trail of manual intervention has been obtained. Manual intervention अगर कहीं पर भी हुआ है तो वो audit trail में आपको दिखेगा. So आपको you need to obtain instruction issued by the bank for what which process to be followed when system generated data is manually altered. जब अगर manually altered हुआ है तो बैंक के क्या instructions हैं, क्या process follow होती है, ये आपको लेनी पड़ेगी, और उसके बाद उसको review करना है. Review the cases wherein the system data, reporting etc. have been manually altered. To identify the reporting requirement and review the system on a sample basis to ascertain the authenticity of the data. So in case of manual updating of maybe interest rate, refund of excess interest by debiting revenue account or expenditure account, so such transactions of course should be reviewed from manual intervention perspective से. हर एक चीज automated है CBS में, एक बार आपने एंट्री कर दी, you cannot do that again changes. अगर आप कर रहे हो तो वो सेपरेट रिपोर्ट में आएगा. So वो सेपरेट रिपोर्ट को आप एक बार चेक करो कहाँ पे मैनुअल इंटरवेंशन किया गया है और उसके रीजंस क्या थे. Furnish your comments on data integrity, including data entry checking correctness, integrity of data, no backend strategies, etc., which is used for MIS to HO or CO level. Data integrity aspect is generally handled at
data administration level. Generally अपने level पे नहीं आएगा. But however, the data entry being done at the branch level, which is used for MIS report at HO or CO level, needs to be reviewed at branch level only. So आप वो MIS ले सकते हैं देखने के लिए. So carry out test check to verify that the data being entered at branch level is done properly and there is proper maker checker principle for the verification of the same. So which means data integrity is there or not, that you need to comment on in this clause. Now in related to fraud, you should write here whatever the information you have collected, or if you have something to comment on related to fraud, you have to write in here in this clause. In general, there is a fourth clause, fraud. So whether any suspected or likely fraud cases are reported by the branch to higher office during the year, अगर आपको ऐसा मिलता है कि ब्रांच ने कोई लाइकली और सस्पेक्टेड फ्रॉड केसेस अपने सीनियर ऑफिस को रिपोर्ट किए हैं, तो आपको यहाँ पर भी वो इंफॉर्मेशन देनी है और उसका स्टेटस क्या है इन्वेस्टिगेशन का एज ऑफ नाउ. सो अगर कोई फ्रॉड डिटेक्ट हुआ है ब्रांच में प्रीवियस में, उसकी लिस्ट ले लो. वो सेम उन्होंने हायर अथॉरिटी को रिपोर्ट किया था कि नहीं किया था वो देख लो, और उसका स्टेटस एज ऑफ नाउ क्या है. वेदर द पर्सन जिसने फ्रॉड किया है वो मिला, उसका कोई ट्रेल मिला है क्या, एनी रिकवरी हैज कम और नॉट. सो ये सारी उसका करंट स्टेटस क्या है. अगर एज इट इज है तो आपको वो एज इट इज रिपोर्ट करना है. In case of in respect of fraud, based on your overall observation, please provide your comments on the potential risk area which might lead to a perpetuation of fraud. So अपना RBI का मास्टर सर्क्यूलर है willful defaulters का, आप वो पढ़ो. There is a definition of willful defaulters. अगर उसमें से कोई भी कंडीशंस आपको मिलती है कि डाइवर्जन ऑफ फंड्स है, एंड यूज ऑफ फंड नहीं है, पर्सन की कैपेसिटी है पे करने की, बट इंटेंशनली द बोरोअर इज नॉट पेइंग द लोन EMIs और समथिंग. सो अगर इसमें से कोई भी वार्निंग सिग्नल्स अगर आपको मिलते हैं, या वो द पर्सन और ट्रांजैक्शन इज कमिंग अंडर द विलफुल डिफॉल्टर, सो आपको वो यहाँ पर कमेंट करना है कि अगर कोई पोटेंशियल रिस्क है पर्टिकुलरली उस अकाउंट को लेके, so that you have to report here is कि I feel so कि there is a potential risk for the particular of this account in terms of fraud. So whether the system of early warning framework is working effectively and as required. So the early warning signals from the basis for classifying an account as RFA. So आप first of all you have to refer the bank's policy. देन आपको अर्ली वार्निंग सिग्नल का भी एक RBI का सर्क्यूलर है. देयर आर सर्टेन नंबर ऑफ पॉइंट्स आर देयर. इट इज रिटन कि आपको अगर इनमें से कुछ भी लगता है, लाइक इफ टर्नओवर इज पुअर, इफ बोरोअर्स के यहाँ रेड हुई है, या फिर ऐसे कोई भी ट्रांजैक्शंस, उसमें से कोई भी ऐसे सिग्नल्स आपको मिलते हैं, तो दिस इज अ अर्ली वार्निंग सिग्नल कि ये अकाउंट फ्रॉड प्रोन हो सकता है. सो आप वो भी देख लो. अगर आपको उसमें से कुछ मिलता है आपके पर्टिकुलरली लोन के अकाउंट में, लाइक एसेट या तो ओवर इंश्योर्ड है, अंडर इंश्योर्ड है, हेवी कैश विड्रॉल्स हो रहे हैं सीसी अकाउंट में, या सीसी अकाउंट करंट अकाउंट भी मेंटेन है, या फिर बोरोअर का सीसी अकाउंट से सारा टर्नओवर या सारी सेल प्रोसीड मूव नहीं हो रही है, विच मीन्स द पर्सन इज हैविंग सम अनदर अकाउंट ऑल्सो जहां से वो बिजनेस कर रहा है. सो अगर ऐसी कोई भी सिचुएशंस है विच इज शोइंग दैट दिस इज अ अर्ली वार्निंग सिग्नल, ये अकाउंट में फ्रॉड हो सकता है या फिर पर्सन का इंटेंशन इज नॉट राइट, सो दैट यू नीड टू रिपोर्ट इट हियर. Whether the branch has a proper system and procedure to ensure data integrity related to data inputs which are to be used for MIS and corporate office level
and for supervisory reporting purpose, have you come across any instances where data integrity was compromised? So simple MIS से आपको मिलेगा, अगर कोई आपको उस रिपोर्ट में लगता है कि कभी डेटा इंटीग्रिटी ब्रीच हुई है या कॉम्प्रोमाइज हुई है एंड द पर्सन बैंक मैनेजर हैज रिपोर्टेड, तो आपको भी यहाँ पे रिपोर्ट करना है. And then fourth general and seventh point is the last point is miscellaneous. In framing your audit report, LFAR, if you have considered the major adverse comments arising out of the latest reports, because we have to review the previous year ka branch audit report, previous year ka LFAR, internal audit, stock audit, concurrent audit, ये सारी रिपोर्ट्स हम लास्ट ईयर की देखते हैं. क्रेडिट ऑडिट रिपोर्ट, RBI inspection report, if any inspection took place in the financial year. So income expenditure revenue audit, RBI का risk area report, IS audit, IT audit, system audit, any special inspection or investigation report. So first ask the branch manager that whether any audit has done or conducted during this financial year. If he said yes ये है, then ask them कि मुझे सारी reports दो, और उन reports में जो जो भी major adverse comments हैं और जिनकी compliances नहीं हुई है, everything you have to write it here. और अगर manager is saying that no or nothing, कोई audits मेरे पास नहीं हुई है, so take this words in the management representation letter. अगर आपको लास्ट ईयर की रिपोर्ट देखने को नहीं मिली है, LFAR नहीं मिला है, प्लीज राइट इट लाइक दैट. वी आर अनेबल टू कमेंट ऑन दैट बिकॉज सिंस the report was not made available for the verification purpose. But just don't say yes or no, because अगर आप yes बोलते हो तो it is assumed that आपने वो reports देखी है, nothing was there, कोई भी adverse comment या remark नहीं था, so all are okay. अगर रिपोर्ट देखी है तो ही आप लिखिए, नहीं देखी है तो प्लीज मेंशन दैट द वर्ड वाज मैनेजमेंट या मैनेजमेंट से ऐसा हमको पता चला है कि कोई ऑडिट नहीं हुई है या हमको रिपोर्ट नहीं मिली है. Whatever the information you got from the branch, you have to write it accordingly. So that's all I have covered, major clauses in LFAR. If you have any questions, I would be happy to answer related to this LFAR. Virag? Yes, ma'am. There are 2-3 questions is there, and people are also requesting your mail ID and the contact details if you can provide to connect with. And also there are many requests for the wonderful and the colorful presentation also, ma'am. Definitely, I'll share with you so you can circulate. Sure. And okay, number to your okay. So you will write it. You will give my number or email, or I should write it here. I can. You can speak also, ma'am. No issue. Okay. My number is. I mean, I should write it. I लिख देती हूँ. It will be better. Okay, okay, ma'am. But send to all. Okay. It goes. I think it. Will you be able to see that, Virag? Please, एक बार देख लो ना. Ma'am. Yes, yes, yes. It's visible to all. Okay. So second भी मैं डाल देती हूँ. Okay. Yes. 9920737198. Yeah. So who is watching on YouTube also, they can also get, and cashweta.co@gmail.com. So people can connect on mail as well. So now I can see the question. Manmeet has written like, in case of vehicle loan, whether the charge is to be registered on Sarsai or on Vahan portal, in addition to charge registration on RTO. To my view, yes.
because वाहन पोर्टल पे तो आपको डालना ही चाहिए. Gold, next question is, gold bullion point will be applicable only in case the branch is in the business of the same. Yes, of course. Yes, it is not the gold loan related. Correct. Gold and bullion, if the branch is having, then of course, like जैसे वो asset में cash रखते हैं, तो same thing if they are having a gold or bullion. It is not like loan related. Yeah, I think the question is over now. Yeah, since there is no question, really, thank Yes, you. ma'am. Thank you so much, everyone, for patiently hearing me. I tried at my level best. But thank you so much, Virag, for giving this opportunity. And it's all our pleasure, ma'am. The wonderful session, and people are really appreciating that on mail as well as on YouTube as well as on LinkedIn. People has watched the session. I have just checked with the Abhay sir also, but sir is still now traveling and not reached the destination. And for him, it's difficult to address as of now. Sir will join some other day with us. But a really wonderful session and very interactive, I can say. Generally in webinar we cannot take questions and very difficult to have a interaction with the participants, but here you have made it very easy, ma'am. uh, Give an answer of all the questions, and people are so attentive. Even on YouTube we have around 100 plus people watching live. So it's a wonderful and memorable session for all of us. Wishing all the our auditors a happy auditing season, happy bank auditing season. And also there are multiple season going on. IPL season also going on, and we have a democracy season, election season is also going on. So but we have to do our work first, and we are very dedicatedly, and entire CA fraternity are very much dedicatedly doing the bank audit season from tomorrow itself. Now many of the branch has many of the bank has already done the allotment, and hope to if you are not get, you can get the next year as well. But this season we have a wonderful knowledge sharing session. Even if we are not getting, or people has not got the bank audit, still they are attending and they are taking the knowledge. So this is the one of the best part for our fraternity. So with Yes. this, we are once again, thank you so much, ma'am, for sharing your valuable knowledge, giving your time on Sunday morning, despite of your busy schedule as well. You have given us time, and to all the attendees, we are very much grateful to you, ma'am, and wishing you all the best for all your endeavor. You are past secretary, we can say, for WRC, and we can say upcoming chairperson as well for the WRC, ma'am. Thank Thank you you so so much, much ma'am. for the wishes. And thank you once again for inviting. It's really my privilege. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. With this, we are concluding our today's session. Thank you so much, all the participants, for very interactive participation and very attentiveness. We'll share the presentation with all of you, and you can watch the recording if you have missed any part on Connect Easy YouTube channel as well. Thank you. Thank you so much. Thank you.